Yes, Upesh ji. यस सर। Some questions from your technical sections. Yes, now. Basic हम अभी डिस्कस यस। करते हैं ओनली कुछ समथिंग। जैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेदर, लेदर कितने टाइप्स के होते हैं? लेदर सर ब्रॉडली 3 टाइप्स के होते हैं, एक क्रोम टेन लेदर, एक वेजिटेबल टेन लेदर एंड कॉम्बिनेशन टेन लेदर। लेदर की जो यूजफुल पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, किस में क्लासिफाई कर सकते हैं हम? व्हाट द यूजफुल ऑफ लेदर इन आवर कंट्री इंडिया? In our country, leather is useful as an export because 80% of manufacturing leather in India is export to the other countries। और इसकी वजह से जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारा बढ़ता है। सेकेंडरी, लेदर से हमारा जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसको बहुत सपोर्ट मिला हुआ है, स्पेशली इन आगरा एंड कोलकाता। कोलकाता और आगरा में फुटवेयर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब है जो लेदर मैन्युफैक्चरिंग करता है, और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ से ऑर्डर्स सीधे आगरा और कोलकाता से फॉरेन में भेजे जाते हैं, जो एक आर्टिकल्स का भी एक्सपोर्ट का जरिया बनता है। एंड दूसरा, थर्डली इज मेन, लेदर के जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेदर के बाई प्रोडक्ट्स उनका भी यूज होता है। कुछ यूज 25% के आसपास यूज इंडिया में हो जाता है, 75% यूज जैसे जो ग्लू वगैरह बनता है वो सब, उसको भी हम एक्सपोर्ट में ही यूज करते हैं। मेनली ब्रॉडली लेदर का मैक्सिमम यूज हम एक्सपोर्ट की तरीके से करते हैं। व्हाट द कॉमन सोर्स ऑफ लेदर, लेदर किस किस से बनता है? जैसे आपने अभी बताया था कुछ द जानवर से कॉमन होता है। सोर्स ऑफ लेदर इज कैटल हाइड्स। Yes. जितने भी कैटल्स होते हैं उन सब से बनता है, एंड स्पेशली फॉर गोट, शीप, बफेलो एंड काऊ का जो लेदर है वो जनरली हम लोग इंडिया में बहुत लिमिटेड स्पेस में बना पाते हैं, और इन फॉरेन कम कंट्रीज काऊ लेदर इज आल्सो यूज्ड। एंड पिग लेदर इज आल्सो यूज बिकॉज पिग लेदर जो, अगर हमें सॉफ्ट लेदर का यूज करना है तो हम उसमें पिग लेदर का यूज करेंगे। हाउ टू, हाउ इज लेदर मेड? कैसे बनाते हैं लेदर के, क्या कौन कौन से मेथड्स हैं, कोई प्रोसीजर होंगे ना? जी सर, लेदर का लाइक। जो है एक प्रॉपरली 3 प्रोसेस से हम लोग उसको गुजारते हैं। एक हमारा बीम हाउस ऑपरेशंस हैं, फिर टैनिंग ऑपरेशंस हैं, एंड आफ्टर दैट पोस्ट टैनिंग ऑपरेशंस हैं। प्रॉपर बीम हाउस ऑपरेशन में सबसे पहले लेदर जो है वो सोकिंग किया जाता है, यानी जो हमें हाइट्स मिलती है उस हाइट्स को प्रिजर्व करने के लिए हम साल्ट करते हैं, जिसको हम साल्टिंग करते हैं, और एक ही स्लॉटर हाउस में ही पहले से ही कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ये टेनरीज में आता है। तो टेनरीज में सबसे पहले इनका हम सोकिंग करेंगे, जिसमें सोकिंग में हम इनका जितना भी साल्ट लगा हुआ होता है वो हटाते हैं, और उस साल्ट की वजह से जो हमारा वाटर निकल चुका होगा उस वाटर को हम दोबारा से इनटेक कराएंगे, ताकि जो लेदर है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस है लाइमिंग।
जिसमें हेयर्स वगैरह जो भी होंगे हाइट्स पर स्किन पे, वो रिमूव किए जाएंगे। और लाइमिंग के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है डीलाइमिंग। एंड डीलाइमिंग के बाद फिर बेटिंग एंड पिकलिंग। बेटिंग जनरली यूज हम वेजिटेबल टेन लेदर्स में करेंगे, यानी वेजिटेबल टेनिंग, टेनिंग का प्रोसेस होता है। अब हमारा ये जो प्रोसेस जो शुरू हो जाएंगे आफ्टर लाइमिंग, ये हमारे टैनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। टैनिंग होती है कि हमारे ऐसे केमिकल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का इनटेक करना जिससे हमारा प्रोटीनस मैटर जितना भी है हाइड्स के अंदर वो बाइंड अप कर ले, और वो पुटरेस्केबल से नॉन पुटरेस्केबल में कन्वर्ट हो जाए। तो जो मेनली हम ब्रॉडली यूज करते हैं वो क्रोम टेनिंग का यूज करते हैं। और क्रोम टेनिंग यूज करने के बाद बीसीएस, क्रोम टेनिंग में केमिकल यूज किया जाता है बीसीएस, बेसिक क्रोम सल्फेट। उसका यूज करने के बाद और कुछ ऑक्सिलरी कंपाउंड्स यूज करने के बाद आ, हमारा जो लेदर बनता है उसको हम वेट ब्लू बोलते हैं। और अगर इस टेनिंग में एक दूसरा प्रोसेस होता है वेजिटेबल टेन, तो वेजिटेबल टेनिंग एजेंट्स होते हैं। उन वेजिटेबल टेनिंग एजेंट्स का भी हम जो ट्रेडिशनली सब बहुत पुराने समय से यूज चलता आ रहा था, उसको अब थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया है, तो वेजिटेबल टेंट एजेंट्स भी मिल जाते हैं। उनको भी हम केमिकली यूज करके हाँ वेजिटेबल टेन लेदर्स बना लेते हैं। और फिर एक सेकंड थर्ड प्रोसेस होता है टेनिंग ऑपरेशन का, वो होता है कॉम्बिनेशन 10H, जिसमें कॉम्बिनेशन मतलब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा केमिकल्स का यूज कर कर हम अपने डिजायर्ड लेदर का मैन्युफैक्चरिंग करें। टैनिंग ऑपरेशंस के बाद जो हमें लेदर मिलेगा, वो लेदर अब नॉन पुटरेस्केबल से वो पुटरेस्केबल से नॉन पुटरेस्केबल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब वो लेदर अब खराब नहीं होगा। और उस लेदर को हम अब रख सकते हैं, और महीने, 2 महीने, 3 महीने तक जैसे भी रिक्वायरमेंट्स आएगी उस हिसाब से हम उस लेदर का पोस्ट ट्रेनिंग ऑपरेशंस का यूज करते हुए यूज करेंगे। पोस्ट ट्रेनिंग ऑपरेशंस में अब हमारे पास लेदर जब यूज होता है तो हम दोबारा से एक रीटेनिंग करते हैं, यानी कुछ जब रखा रह जाता है लेदर तो उसमें कुछ कमी हो जाती है, तो उस चीज़ों को कमी करने के लिए के बाद दोबारा से प्रोसेस होता है रीटेनिंग का। रीटेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद पिकलिंग करते हैं। एंड आफ्टर दैट सर, पोस्ट ट्रेनिंग ऑपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो होता है वो मैकेनिकल ऑपरेशंस यहाँ से शुरू हो जाते हैं। जैसे बफिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, तो ये ड्राइड करने के बाद ये यूज होते हैं सर। और यस। उसके बाद फिर अपना डिजायरस लेदर जैसा भी है, अपहोल्स्ट्री लेदर बनाना है तो हमको उसमें फैट लिकरिंग यूज करना पड़ेगा। अगर हमें सोल लेदर बनाना है तो हमें फैट लिकरिंग को यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें वो हार्ड लेदर चाहिए होगा। और अगर लेदर ज़्यादा मोटा है, यानी अगर बफ हाइट का है वो लेदर, या फिर पिग स्किन का है लेदर जिसमें हमारा थिकनेस जो ज़्यादा है, तो उस थिकनेस को कम करने के लिए हम उसमें स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग करने के बाद हमें 3 तरीके की लेयर्स प्राप्त हो सकती हैं। एक ग्रेन लेयर हो जाएगी, एक जो कि अपर लेयर होती है, एक मिडिल लेयर हो जाएगी, जिस इस मिडिल लेयर से हम मैक्सिमम स्यूट लेदर का निर्माण करते हैं। और एक लास्ट में हमें जो लेयर होगी वो फ्लैश लेयर हो जाएगी। वो फ्लैश लेयर हमें अगर जब भी सॉफ्ट लेदर यूज बनाना है तो हम फ्लैश लेदर बनाते हैं, फ्लैश लेयर से लेदर बनाएंगे। यस, मार्केट में लेदर को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, यूजफुल पॉइंट, जैसे लेदर मार्केट में प्रोडक्ट्स सबसे किस तरह हाँ, से यूज करते हैं उनको? सबसे ज्यादा यूज सर मार्केट में लेदर का यूज होता है, वो प्रोडक्शन के बेसिस पर अगर हम देखें तो वो होता है फुटवेयर इंडस्ट्री में। और इकोनॉमिकल इंडस्ट्री में देखें तो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपका अपहोल्स्ट्री लेदर में। अपहोल्स्ट्री लेदर यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यानी जितनी भी आपकी महंगी गाड़ियां आती हैं उन सब में सीट कवर वगैरह जो यूज होते हैं वो प्रॉपर लेदर के यूज किए जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन होता है कि लेदर को ब्रीथेबल फर्नीचर का नाम दिया गया है, यानी उस अगर कोई भी फर्नीचर हमारा लेदर से बना हुआ होता है तो ऐसा माना गया है कि उसमें हमें पसीना नहीं आएगा, इसीलिए जितनी भी महंगी गाड़ियां होती हैं और उसमें हम लेदर का यूज करते हैं। और थर्डली हमारा जो यूज होता है वो हमारा फैशन इंडस्ट्री में यूज होता है, जिसमें हम हैंडबैग्स वगैरह बनाएंगे। और लेदर के जो छोटे मोटे आर्टिकल्स हैं, जैसे बेल्ट्स हो गई, और बाकी और जो फैशन आर्टिकल्स हो गए, यस, तो उस तरीके गारमेंट्स से वो हैं, लेदर गुड्स है, गारमेंट्स फुटवेयर है, वगैरह। हार्डनेस है।
लेदर सर। स्पोर्ट्स गुड्स हैं, उनमें काफी जगह यूज किया जाता है लेदर का, हर जगह, हर मार्केट्स के अकॉर्डिंग। सर। जो अभी बजट है इसका, ग्लोबल मार्केट वगैरह क्या है, कितना है इंडिया में, बजट के अकॉर्डिंग अपना इंडियन मार्केट या ग्लोबल मार्केट कितना है? हाँ सर, अभी इसका आइडिया नहीं सर मेरे को। कुछ स्कीम्स वगैरह है जो चल रही हैं इंडिया में, वो आपको करना है। स्कीम्स जैसे आपके यूपी की बात करते हैं तो यूपी में बजट के अकॉर्डिंग कुछ स्कीम्स जो चल रही हैं, और सेंट्रल पे चलो, वो स्टेट का हो गया, सेंट्रल की कौन कौन सी है, तो वो स्कीम्स आप कीजिए। बाकी ये बेसिक पॉइंट क्लियर है, बाकी हम इनको और सर। डिस्कस करेंगे अभी डीप में। आज तो हमने सिर्फ ओनली बेसिक किया हुआ है। तो जो स्टेट सर। की लेदर की स्कीम्स है, बाकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अब वैसे सर। वो बेसिक पॉइंट तो वहाँ अपलोड किए हुए हैं, लेकिन स्कीम बजट की है वो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा पीडीएफ उनकी। तो ये जी आप थैंक यू सर। बजट लेदर की स्कीम्स हो गई, सेंट्रल की हो गई, ये आप थोड़ा स्टडी कर लेना। तो बजट में कितना जी सर। क्या है, इकोनॉमिकली है वो सारी चीजें, कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना बेनिफिशियल है, लॉस है, आगे का बजट क्या है, लास्ट नेक्स्ट 10 ईयर का इकोनॉमिक क्या कंडीशन है लेदर की, कहाँ ग्रोइंग होगा उसका, तो वो सारी पॉइंट आप देख लेना। बाकी आज का इतना सफिशियंट है आपके लिए। बाकी नेक्स्ट डे हम फिर डिस्कस करेंगे। एक दिन का गैप ये करेंगे, 1 डे का गैप के अकॉर्डिंग ठीक हम है सर। मॉक है ना, क्योंकि जो आपका जो सर। सेक्शन है ये आप रिवाइज कर सकें, ठीक है सर। है ना। और इसमें सर क्या क्या और सुधार की जरूरत है, जैसे यस, तो देखिए वो आपका मुझे। फर्स्ट सेक्शन जो इंट्रो है उसको आप थोड़ा मॉडिफाइड कीजिए, उसमें थोड़ा ठीक है डिटेल सर। में, और ठीक है। जैसे चेस आपकी जो हॉबी है चेस, इसको थोड़ा ना स्टडी कीजिए, जिससे कि आप डिस्क्राइब ठीक है। कर सकें, है ना। वो आपने अपने ठीक है अकॉर्डिंग सर। बता दिया था, आप अपने माइंड फ्रेश के लिए, लेकिन इसको थोड़ा चेस जी। क्या है, क्या रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स, चेस कैसे खेलते हैं इंडिया में, कौन कौन सा, तो वो थोड़ा आप इसको थोड़ा इसका लुक दें, थोड़ा स्टडी कीजिए वर्क इस पर। क्लियर। सर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका नेटिव प्लेस। तो नेटिव प्लेस आपका जो अलीगढ़ यूपी है, वो आपने बेसिक पॉइंट बता दिए थे, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या सर। है, अलीगढ़ कब बना था, क्यों बना था, क्या रीजन है, ये थोड़ा आप थोड़ा बेसिक देखना। और इसका पॉलिटिकली इकोनॉमिकली क्या रोल है, वो सारी चीजें आपको देखना है यूपी में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफिकली, वो पॉइंट बता सकते हैं। और ऐसे यूपी को आपको थोड़ा स्टडी करना है कि ये इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, बेसिक पॉइंट। यस। तो सर। ये आपको नेटिव प्लेस जो आपका है इसको थोड़ा वर्क करना है। बाकी लेबोरेटरी तो बेसिक पॉइंट है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आपने बता ही दिए बेसिक। बाकी जो बीटेक है आपने डिस्क्राइब कर दिया था, ये आपका जो प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बेनिफिशियल पॉइंट क्या है, आपकी ये टॉपिक है, इसके बेनिफिट सोसाइटी में प्रेजेंटली कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसको डीप में हम सर। देखेंगे। तो इसको थोड़ा डीप में आप करना, आज तो सिर्फ बेसिक ही था, उसमें बहुत सारी क्वेश्चन हम जी सर। करेंगे। बाकी आपका ठीक है, बेसिक यूपीएससी पे थोड़ा वर्क करना और एमएसएमई पे। तो आज थोड़ा बेसिक किया है, लेकिन इसको थोड़ा डीप में आप स्टडी कीजिए, जैसे एमएसएमई है, एमएससी के बजट क्या कितना ठीक है सर। प्रेजेंटेशन हुआ, उसको क्राइटेरिया क्या है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम उनका क्या क्राइटेरिया है, अभी जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किस लिए हुआ है, उसका क्या रोल है। तो एमएसएमई को थोड़ा डिटेल में आपको स्टडी कीजिए बस, बाकी आपने किया हुआ बेसिक आज हो गया है, थोड़ा डीप में होना ठीक चाहिए। है जैसे क्वेश्चन हम आपको बोल दिया जाए 50 या 100 वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए एमएसएमई, क्या हिस्ट्री क्या है, व्हाट द मेन हिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, कब फाइंड हुआ, कब इसका नाम दिया गया, वो सारी चीजें हमें देखनी। यस, बाकी ठीक है, बेसिक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा डीप में हम क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। सर। एक चीज सर, बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था, जैसे मेरी पिछले 9 सालों में 4 अलग अलग प्लेसेस पे पोस्टिंग रही है, जिसमें एमपी में सागर है, और मथुरा है, आगरा है, एंड आफ्टर अभी प्रेजेंटली मेरा ट्रांसफर हुआ है बबीना, झांसी यस, के पास में है। तो क्या इन प्लेसेस के बारे में भी मेरे को जानकारी रख, मतलब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इन प्लेसेस के बारे में भी? यस, बिल्कुल। आपका, इसीलिए तो मैंने आपको कहा है, आपका जो यूपीएससी का फॉर्म आपने जो फिल किया है, वो मुझे जी जी। भेजिए, और आपने जो रिज्यूम बनाया होगा लेटेस्ट, तो वो मुझे भेजिए, पता चले कि आपकी जॉब वगैरह कहाँ पे की है, और आपकी जो प्लेसेस है, तो जॉब से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। अभी एक कैंडिडेट हॉजरी से इंटरव्यू दे के आए हैं, जॉब प्रोफाइल से, तो वो जॉब कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर से समथिंग, तो उनसे बहुत सारे सर। क्वेश्चन किए, और आप तो 8 ईयर से कर रहे हैं, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे जॉब से। सर।
कहाँ कहाँ पे आपने किया है, और आपने आगरा का बोला हुआ है और भी एमपी का किया हुआ है, तो उसकी बेसिक चीजें पूछेंगे। वहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन है एमएसएमई में, आप इतने साल से वर्क कर रहे हैं, तो प्लेसेस के जो आप बताएंगे तो उससे भी क्वेश्चन करेंगे ना। अभी रिसेंटली जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उसमें सर टेक्निकल पार्ट्स कितना पूछा जा रहा है, या जैसे मैं वर्किंग टेक्निकल में हूँ पार्ट तो क्या? यस, टेक्निकल पार्ट समथिंग अराउंड 50 to 60%। ओके। टेक्निकल सेक्शन 50 to 60%, अदर वन 10-10%। सबसे बड़ा रोल है आपका बीटेक, बीटेक प्रोजेक्ट का काफी लगभग 20%। और आपका टेक्निकल सेक्शन, बाकी जो यूपीएससी है, एमएसएमई है, आपका बेसिक इंट्रो है, यहाँ से समथिंग, बाकी अदर लेफ्ट 30%। दे विल आस्क। ओके। ठीक सर, बाकी थैंक यू आपका सर। ठीक है, इस पे आप करते रहिए थोड़ा वर्क, तो हम इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ज़्यादा काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जी ठीक सर। है। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, वेलकम। यस, लीव इट। यस अजय। Yeah, hello, sir. यस। टुडे विच टॉपिक, एनी स्पेसिफिक टॉपिक या एन ऑल ओवर? Sorry, sir. एनी स्पेसिफिक टॉपिक यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर मॉक इंटरव्यू या ऑल ओवर टॉपिक? Sir, we can do technical parts today. टेक्निकल सेक्शन। Yes, sir. यस, गुड। ये लेट बी स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, sir. My name is Ajinkya Patil. I hail from state of Maharashtra, district of Dharashir. I have completed my class 10th and class 12th from Kendriya Vidyalaya, Pune, and I have graduated from IIT Guwahati from Chemical Science and Technology branch. यस, गुड। योर टेक्निकल सेक्शन इज फर्स्ट टॉपिक यूनिट, योर subject is chemical, na? Yes. Yes, sir. Your first topic is thermodynamics. Have you read thermodynamics? Yes, sir. What is thermodynamics? What is the basic principle of thermodynamics? So thermodynamics is the study of relation between heat, work, temperature, and energy, and these are governed by certain laws of thermodynamics, which tells the relation between these entities. Yes, thermodynamics basic is system surrounding. What is system? So system is the anything which is we are observing is the system, and the anything which is outside this system is the surrounding. System is three types: open system, closed system, isolated system. Yes, can you Yes, explain? sir. So in closed system, there is no interference of the surrounding. That means there's no heat or mass transfer. In open system, there is mass and heat transfer from the surrounding. Is what the example of open system, closed system, and isolated system? Examples. So any system, let's say the having adiabatic process is a closed system, and in any system, if you are doing some work on it, or if you're providing some heat to it, then it's an example of open system. Yes, good. Next one, intensive, extensive properties in thermodynamics. So intensive properties are which are innate to the system. For example, if we divide the system into smaller parts, these properties does not change. For example, let's say the density, the refractive index, the viscosity. These are example of intensive.
But extensive are it changes if we it changes with if we divide the system. For example, the mass or uh, let's say uh, the Example of intensive molarity, extensive. other volume. Sorry, sir. What the example of intensive extensive property? Example. So examples of intensive property is let's say viscosity, refractive index, density, and for extensive is mass of the system or the number of moles within the system. Yes. Next one, macroscopic and microscopic properties in thermodynamics. Uh, Sorry, sir, I'm not aware of it. The properties associated with a large number of particles of a system are called macro. A small number of Okay, particles is micro. Micro is example is mass, bond angle, bond length, and macro okay, is okay. example pressure, volume, temperature, density. Basic. Yes. Next one is ideal gas process. Four type: isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric. Can you describe one by one? Yes, so isobaric system is in which the pressure remains constant, whereas the other entities such as volume, temperature can change. In isochoric, the variable of volume remains constant, and other variables like uh, pressure and temperature can change. In isothermal, temperature does not change; it remains constant. And in adiabatic process, there is no no transfer of heat and work. Sorry, only heat. What the basic difference between state function and path function in thermodynamics? In state function, the function does not depend on the path the process takes. It only depends on the initial and final stage of the state of the system. Whereas path function is dependent on the path taken by the system. The example of path function is heat and work, whereas the examples of state function are temperature, pressure, enthalpy, entropy. Yeah, next one is work done on the system and work done by the system. What is first of all, what is work? What is work? Uh, W. so, uh, so, so work is defined as the product of pressure and volume, uh, change in the pressure and volume. Let's work is equal to minus P into dV. And so if a work is done on the system, then the sign of the work is taken as positive, whereas if the system is doing the work on the surrounding, then the work is taken as negative. Basic only, yes. Next one, reversible, irreversible process. What is reversible, irreversible process in thermodynamics?
Sir, reversible processes are are ideal processes. Reversible processes are takes place in an infinitesimally small steps, whereas irreversible processes are whatever there are whatever processes we have in this universe are mostly irreversible processes, and they have finite steps as compared to the reversible, which has infinitesimally small steps. Yeah, thermodynamics law. How many type of thermodynamics law? So there are four types of thermodynamics laws. First is the zeroth law, uh, when which is if two systems are in equilibrium with the third system, then the first two are in equilibrium with each other. And then the first law of thermodynamics is the conservation of energy. The energy can not be cannot be destroyed or created. It can be only conserved. And the second law of thermodynamics is the entropy of an isolated system always increases. The third law is the entropy of a system approaches approaches a constant when the temperature is approaching absolute zero Kelvin. That is zero Kelvin. Your next one is first law thermodynamics. What is first law thermodynamics? So it's the conservation of energy. The energy cannot be destroyed or created. It can only be conserved. Next, second law thermodynamics. What is second law? So according to the second law of thermodynamics, the entropy of an isolated system always increases. Entropy. What is entropy? Entropy is the degree of randomness or the disorder of the system. It is also called the unavailable work uh, done of the system. Spontaneous, non-spontaneous process. What is spontaneous, non-spontaneous process in thermodynamics? So spontaneous processes are something which does not require any external influence. They happen on its own. And non-spontaneous processes need some energy or work to initiate the process. Yes, basic point is good. Next one is third law thermodynamics. According to the third law of thermodynamics, the entropy of the system uh, reaches a constant as the temperature of the as the te- absolute as the temperature approaches absolute zero. Yes, entropy and residual entropy. What is the difference? Sir, uh, uh, when in a perfect scenario, if we have a perfect crystalline structure, then at 0 degrees Celsius, then 0 Kelvin, then the entropy is said to be zero. But practically, there at 0 Kelvin, there still remains some entropy within the system. So and this remaining entropy is called the residual entropy. Next is heat engine.
Do you have any idea about Carnot cycle, Yes, sir. heat So engine? Yes. What is Carnot cycle? Carnot cycle engine is an ideal concept. It is said to be the most efficient, but it's not 100% efficient. Uh, it has four steps. First is the isothermal expansion. Second is adiabatic expansion. Third is isothermal uh, compression. Fourth is adiabatic compression. Yes. How many processes present in Carnot cycle? Can you describe? Basic. So there are four processes, as I mentioned. First is the isothermal expansion, in which the temperature remain constant and heat is provided to the system to maintain that temperature because of the expansion. Second is the adiabatic expansion. In this expansion happens, but there is no transfer of heat, uh, and this results in drop in temperature. Third, the uh, thermal compression, which the volume of the atom contracts, but to maintain that temperature, heat is provided. Sorry, heat is released from the system, and last step is the adiabatic compression, in which the volume of the system is again contracted, and since there is no release of uh, so there is no heat provided to the system, the temperature of the system again increases. Yes, good. Today only basic point. What is Joule-Thomson effect in thermodynamics? Sir, Joule-Thomson effect is the change in temperature when a uh, gas is expanded and no work or there's no production of work. And almost, sir, all gases except hydrogen and helium have a cooling effect, uh, whereas hydrogen and helium have a heating effect. Joule-Thomson coefficient. What is Joule-Thomson coefficient? What the value of Joule-Thomson coefficient in Sir, ideal gas, Joule real Thomson gas? Sir, Joule Thomson coefficient is refers to the change in temperature with respect to pressure, with respect to change in pressure at constant enthalpy. For ideal gases, Joule Thomson coefficient is zero, whereas for a real gas, it depends on the van der Waal constants of the real gases. Yes. What is inversion temperature in thermodynamics? Inversion temperature. Yes, sir. So the temperature below which the gas have a cooling effect. Yes. At which temperature at the UJT, Joule-Thomson coefficient change the sign is known as inversion temperature. Sorry, sir. Yes, sir. The inversion temperature is when the real gases behave ideally. That's the inversion temperature. Yes, have you read the Maxwell relation in thermodynamics? Do you have any idea? Maxwell relation. Uh, yes, sir. These are set of equation which give Yes. relation between thermodynamic entities like temperature, pressure, entropy, volume.
Yes, enthalpy, del E, del H, del A, del G gives free energy. Four equation Yes, now sir. present in Maxwell relation. Can you describe one by one? Yes, sir. Uh, Sorry, sir. I haven't prepared that deep. Okay, no problem. Today only basic thermodynamics. What is Hayes law in thermodynamics? Uh, Hezbollah, sir. Let's say for any from starting product to a final product, there can be multiple routes. So has from Hess law, the summation of all the enthalpies remains constant in all the pathways. Yes, what is enthalpy? Del H. So yes, sir. So enthalpy is the measure of the energy within the system. For example, in chemical reaction, del H, sorry, del H is equal to delta U plus P delta V. Yes. Any drawback? Yes, let's go through on zero law thermodynamics. Drawback, zeroth law. Limitation. Yet zeroth law, the Right. thermodynamics process is A, equilibrium B, B equilibrium C. Yes, sir. So Yes, doesn't sir. Then measure E is temperature. equilibrium C. Yes, Yes, sir. doesn't measure temperature. One limitation. Doesn't provide final reading. Because it's change in if equilibrium B, B equilibrium Okay, C, okay, C. Do not provide okay, doesn't provide the final reading. Here's the okay, limitation of zeroth law of thermodynamics. okay. First law, limitation. So it's one of the most basic law, one of the most basic laws. So uh, First law thermodynamics limitation is direction of flow, heat flow. है ना? Doesn't okay, specify the direction, which one is flow, okay, okay, left and right. Reversibility, efficiency, spontaneity. Spontaneity doesn't provide spontaneity in provide in the second law. No? right, sir. Natural phenomena. The law doesn't explain the many natural phenomena from second law of thermodynamics. Right. Second law, limitation. Absolute zero. Efficiency, irreversibility of heat transfer. Heat cannot be completely converted to work without processing waste heat. Entropy always increase. Right. Yes, The sir. limitation of second law thermodynamics, creating a closed system.
absolute zero. Visual entropy is defined by the third law of thermodynamics. No? Right. And third law limitation. So the limitation is that it's not really possible to uh, approach zero, absolute zero. Yes. It's not possible to reach the absolute zero. Yes. Limitation of third law. Carnot cycle. Carnot cycle, any limitation? So the limitation is that though it's the ideal, but it still does not provide 100% efficiency. Yes. And yes, so that's Heat transfer, friction,